Hello everyone, my name is Mandira. Welcome to AglaSem, and today we are going to be studying class 10 chapter number 6, political parties. So in this chapter we are going to find out what political parties are, what are the rules of political parties, why do we need them in a democracy, and what are the different political parties that currently exist in the nation. Although this book has not been revised for a while, so maybe 2-4 parties ऐसी होंगी जिनका नाम मिस हो गया है, but the main parties are still there and they are still into the political background. So let's start with the chapter and the first heading, why do we need political parties? But before that, let's study the meaning of a political party. So a political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. They agree on some policies and programs for the society with a view to promote collective good. So, आपको पता ही है political parties क्या होती है? Maybe this is the first time you're hearing the definition of a political party, but we all know what they are because हमारे घर में भी बहुत सारे discussions होते हैं about politics, कौन किसकी पार्टी को support करता है. पार्टी का मतलब क्या होता है? Basically a group of individuals who come together to govern and to rule the nation and to contest elections as well. So that's a political party. Parties reflect the fundamental political divisions in a society. They are about a part of society that involves partisanship. So, thus a party is known by which part it stands for, which policies it supports, and whose interests it upholds. तो आपको कैसे पता चलेगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी में और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में क्या फर्क है, या फिर व्हाट इज द नीड ऑफ हैविंग मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी? बिकॉज ईच ऑफ देम इज प्रमोटिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ व्हाट यू कॉल स्पेक्ट्रम है, या आप कुछ भी बोल दो, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे पार्टीज जो होती हैं वो अलग होती हैं. कुछ थोड़ी सी ज्यादा राइट विंग पार्टीज होती हैं, कुछ लेफ्ट विंग. दैट इज एक्चुअली अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट दैट यू विल लर्न इन हायर क्लासेस, और मे बी अब तक आपने पढ़ लिया होगा. तो दैट्स द पॉइंट दैट different parties have different priorities. कुछ parties ये चाहती हैं कि we need to, for instance अभी हम आगे पढ़ेंगे कि uniform civil code कि equal laws for everybody regardless of religion. That's what some parties trying to promote. Maybe some parties trying to promote the rights of religious minorities. So सबकी अपनी अपनी अलग priorities होती हैं. That's why they are different parties. Okay, so let's start talking about what we need them for. What are the functions? Number 1, parties contest elections. So in most democracies, elections are fought mainly among candidates put up by political parties. They select their candidates in different ways. तो मेन बात यह है कि अगर आपको कोई कैंडिडेट आपके एरिया में से पसंद है, then that he has to be affiliated with one of the larger parties practically to win an election. Okay. Number 2, they put forward policies and programs. जैसे मैंने आपको बताया, some parties will put forward uniform civil code maybe, and some parties will do something else. So, they put forward policies. Number 3, they make laws, because when they actually get elected, these जो हमारे ministers होते हैं, जो हमारे parliament के जो हमारे politicians होते हैं, they are actually members of the parties that were contesting previously. So they make laws, they form and run the government when they become the ruling party. तो यहाँ पर अब हम थोड़ी सी बात करेंगे ruling party की. जैसे मैंने आपको बताया, making laws is the function of a ruling party. Forming a government and running the government is the responsibility of the ruling party. There is also the role of opposition, and the role of opposition is questioning the government's policies. क्यों ऐसा करा आपने ये लॉ क्यों पास किया, या इस लॉ में ये लूप होल्स हैं, या जो आपने ये पास किया था certain sort of किसान योजना या कोई भी योजना पास करी थी, that is actually not reached the kisans. तो ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन करना है, that is the role of a good opposition party. So they also shape public opinion about certain things. So I think with regards to any uncontroversial opinion in India, like जैसे हम लोग we all agree on the fact that yes, the poor should not be taxed. It's also written in our constitution, but that's also something we agree on. And the government should release pro-poor schemes. So this is how the parties have shaped public opinion, because कई सालों से this is how their policies have been, and that's how we view pro-poor policies, that we are all for it. ठीक है? Political parties have access to government machinery and welfare schemes. Exactly, वही मैं आपको बता रही थी, चाहे वो किसान से related government scheme हो, चाहे वो women से related government scheme हो, they have the authority. Okay, so obviously there is a necessity, because कैसे हम अब आप बोलोगे कि चलो ये सारी चीजें तो हो सकता है कि कोई independent candidate भी कर ले, but ऐसा नहीं है. If political parties were not there, then everyone will be contesting the election on their own, and there will be no structure to democracy whatsoever. किसकी पार्टी को वोट दें समझ में नहीं आएगा, right? क्योंकि और अगर चलो मैं कहती हूँ एक कैंडिडेट खड़ा हुआ independently और वो जीत भी गया, then one person should not have that much power, and neither can he
हैंडल ऑल दैट पावर कि एग्रीकल्चर भी देखना है और डिफेंस भी देखना है, इतनी सारी मिनिस्ट्रीज भी देखनी है. So that's why we need a group of people. We need a group of people to constitute a political party. That's the necessity. अब अगला क्वेश्चन आता है, how many should we have? So for instance, China has only one, Communist Party of China, and anyone who wants to take part in the government machinery must be approved by the Chinese Communist Party. So this is kind of a fascist kind of system. एक ही पार्टी है, लोगों के पास choice नहीं है, और obviously since China is not a democracy, they are not accountable to give any kind of democratic freedom to their people. But yes, India as a democracy will not have such a structure or should not have such a structure. ठीक है. बाकी कुछ होते हैं दो पार्टीज वाले. फॉर इंस्टेंस इन यूनाइटेड स्टेट्स, रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स. आपने जरूर सुना होगा, इफ यू हैवंट फॉलोड द यूएस इलेक्शंस, एक्चुअली इट्स वेरी क्लोज टू व्हाट हैपेंस इन इंडिया एज वेल. सो इट्स अ गुड इलेक्शन टू फॉलो. आपने देखा होगा लास्ट टाइम, इस टाइम जो बाइडन वाज एक तरफ थे एंड डोनाल्ड ट्रम्प. सो देयर आर बेसिकली टू पार्टी सिस्टम. ठीक है, बाकी की सारी पार्टीज इरेलीवेंट हैं. एक टाइम पर इंडिया भी ऐसे ही हुआ करता था, वेयर कांग्रेस एंड बीजेपी वाज देयर एंड अदर पार्टीज वर इरेलीवेंट इन टर्म्स ऑफ अ सेंट्रल कॉन्टेक्स्ट. इनफैक्ट अभी भी ऐसा ही है, बट द पावर शेप हैज चेंज्ड, द पावर प्ले हैज चेंज्ड. But technically India has a multi-party system because regional parties को allow करने के लिए, and even at a national level if they are willing to grow. So for instance, where I stay in Delhi, there we are under यहाँ पर BJP, Congress और आम आदमी पार्टी. There are 3 parties. So obviously there can be 4 and 5 and 6, but it is a multi-party system so that other parties can also get. ऐसा नहीं है कि सिर्फ BJP और Congress में से ही एक जीतेगा. In fact, for the last 10 years, it has not been one of the 2 major parties of the country. Okay. So now let's talk about some of the main parties in India. सबसे पहले बात करते हैं Indian National Congress की, because it is the oldest, I'm assuming. Yes, it is the oldest party. So because I think Indian National Congress has its roots in the nationalist struggle, जो हमारी British freedom struggle से पहले की पार्टी है. That's why it's the it has been influential. It has been the most popular. तो अब तो खैर ऐसा नहीं है. Now भारतीय जनता पार्टी is taking the lead. But yes, for so many years it was so popular because of this only. So it was formed in 1885 in the leadership of Jawaharlal Nehru, who sought to build a modern secular democratic republic in India. That's a good goal. It's but it was then formed in 1980 to 1989. After 1989, support decline हो गया. Then basically a centrist party, neither right not left in its ideological orientation. The party espouses secularism, welfare of the weaker sections and minorities. So लेफ्ट विंग पार्टी, मैं आपको थोड़ा सा एक बता ही देती हूँ, वो होती हैं जो कि प्रो पुअर होती हैं, सोशलिस्ट सॉर्ट ऑफ सोशलिस्ट पार्टीज होती हैं कि who do not believe कि the most of the money of the country should lie in the hands of a few people, right? अलग अलग स्पेक्ट्रम्स होते हैं, इकोनॉमिक स्पेक्ट्रम अलग होता है और एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम अलग होता है. पर लेफ्ट विंगर्स जनरली इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन जनरली प्रमोट करते हैं. जनरली गे राइट्स दे विल प्रोटेस्ट फॉर दैट, एंड एनी अदर प्रो पुअर, प्रो माइनॉरिटीज, ये सारे जो होते हैं ये हमारे लेफ्ट विंग में आते हैं. पॉलिटिकल ओरिएंटेशन जहां तक कंसर्न है. राइट विंग में ट्रेडिशनलिज्म आता है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को अपलिफ्ट करना, अपहोल्ड करना आता है, राइट. एंड राइट विंग में थोड़ा सा अथॉरिटेरियनिज्म सॉर्ट ऑफ आता है. जनरली राइट विंग पार्टीज अगर आप नोटिस करोगे दुनिया में, दे आर बिहाइंड वन कैरिज्मेटिक लीडर. सो या, that's how right wing politics works. And right wing politics also उनको minorities में कुछ ऐसा मतलब खास नहीं. उनको they believe in the rule of not in the rule of majority, but yeah, they when right wingers are concerned, they for the main thing for them is traditionalism and upholding the authority of a particular religion. So that's how right wingers work. तो भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, which is currently the biggest. It is the largest party in the world, वैसे, just for I'll let you know, and it is currently also the largest party in India. So cultural nationalism और हिंदुत्व की एक इन्होंने they follow the ideology. Wants full territorial and political integration of Jammu and Kashmir with India, a uniform civil code, as I talked about it before. It's a very good thing for living in our country, irrespective of religion, and ban on religious conversions, right? Its support base increased substantially in the 1990s. Okay. Next is the Bahujan Samaj Party. Now this is under the leadership of Kanshiram, seeks to represent a secure power for Bahujan Samaj, includes Dalits, Adivasis, OBCs and religious minorities. This was in power while before in UP when Mayawati was the chief minister. She belongs to this party.
कम्युनिस्ट पार्टी CPIM, ये मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म के सपोर्ट सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, अपोजेस इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म. केरला में अभी दिस पार्टी वाज इलेक्टेड एंड आई थिंक नॉट इवन वन पार्टी कुड सिक्योर लाइक a substantial amount of seats. सारी की सारी सीट्स इनको मिली थी. मुझे याद है बहुत ही शायद 1-2 सीट्स किसी और पार्टी को मिली थी. सो इट हैज बीन वेरी पॉपुलर इन केरला एंड वेस्ट बंगाल. CPI ये इसी का एक थोड़ा सा वो है, अपोज द फोर्सेस ऑफ सेक्शनिज्म एंड कम्युनलिज्म. सो कम्युनलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिज्म. कम्युनिज्म अलग होता है. कम्युनलिज्म इज फाइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, डिविजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. ठीक है. So it became weak after 1964. Finally, Nationalist Congress Party founded in 1990. Split हो गया था कांग्रेस पार्टी में तब. Espouses democracy, Gandhian secularism, equity, social justice and federalism. So these are their main, ideological points. So up next we will talk about the challenges to political parties. Let's talk about the 3 main challenges. Number 1, the first challenge is internal democracy within the parties. Exactly. So ऐसा नहीं है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले पार्टी मेंबर्स को पूछा जा रहा है. समटाइम्स क्या होता है कि 1 या 2 ही या 3 या 4 परहैप्स कैरिज्मेटिक लीडर्स होते हैं और वो ही डिसीजंस लेते हैं. एंड कभी कभी पार्टी के सारे लीडर्स को पता भी नहीं होता है कि डिसीजन क्या होगा. सो यू कैन सी दैट दे वर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बट दे आर नॉट विद होल्डिंग डेमोक्रेसी विद इन देयर पॉलिटिकल पार्टी. है ना, सबकी नहीं सुनी जा रही, सबका वोट नहीं लिया जा रहा, 2-4 लोग डिक्टेटरशिप चला रहे हैं. सो दैट्स अ कॉमन प्रॉब्लम in a political party. And who's the best person to answer? The best person to answer is someone who is working within the party. कोई कार्यकर्ता है पार्टी के या फिर कोई पोजीशन होल्डर है. They can tell us the best about how much democracy there is within a political party. Okay. The second challenge is the dynastic succession. So the first challenge मैं आपको बताऊं, ये कभी कभी हम लोग अभी सुनते हैं तो जो करंट रूलिंग पार्टी है उनके कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है. ये जो डायनेस्टिकल सक्सेशन है ये हमारी फॉर्मर रूलिंग पार्टी के बारे में बोला जाता है. कांग्रेस पीपल आर ऑलवेज कंप्लेनिंग दैट व्हाई शुड मेंबर ऑफ द गांधी फैमिली गेट प्रायोरिटी इन द कांग्रेस पार्टी एज अ मेजर लीडर व्हेन देयर आर अदर डिजर्विंग लीडर्स एज वेल, राइट. सो I mean, obviously, if they are themselves really great leaders, then ऐसी कोई बात नहीं है. नेपोटिज्म तो हर जगह होता है, लेकिन यहाँ पर it is quite, it was quite relevant, it was quite visible that okay, someone has gotten the space just because they belong to a certain family. So this is called dynastic succession. ये UPA बेचारे alliance बहुत दिनों से इसके साथ struggle कर रहे हैं. Even now they are struggling with that. This is the one quiver in the one arrow in the quiver that everybody is telling them कि ये तो आपने गलत किया है. So third challenge is about money and muscle. बहुत सारे गुंडे बदमाश, आपको तो पता ही होगा, और बहुत सारे रिच मल्टी मिलियनर बिजनेसमैन वो पार्टी को बेसिकली फंड्स देते हैं टू contest the elections and spend money on their election campaign, and in return they will expect favors from the parties after they have been elected. Literally every party that has been elected in India until now is guilty of doing this. The fourth challenge is that very often parties do not seem to offer meaningful choice to the voters. वही कहते हैं ना, 2 बुरों में से हमें एक better, you have to choose between the 2 of the options that are already pretty bad. So that's the case within India as well कि जो एक डेवलपमेंट के मुद्दे पे लड़ रही हैं पार्टीज या फिर इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, ये सब उन पे करने के लिए वी नीड मोर पॉलिटिकल पार्टीज दैट विल कॉन्टेस्ट इलेक्शंस ऑन दिस रादर देन कम्युनलिज्म एंड अदर क्रैक्स दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री, राइट. हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड? कैसे ठीक किया जाए इस चीज को? नंबर 1, डिफेक्शन को थोड़ा सा कम किया जाए. मतलब आप देख रहे होंगे कि अभी यू वर फॉलोइंग द बंगाल इलेक्शन, देयर हैव बीन सो मेनी डिफेक्शंस. पहले वो टीएमसी वाले लीडर्स बीजेपी में चले गए, फिर बीजेपी वाले टीएमसी में वापस आ गए आफ्टर दे वन. सो मेनी डिफेक्शंस दैट यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस. Constitution was amended to prevent MLA and MPs from changing parties. This was done because many elected representatives were indulging in defection. पार्टी बदल लेते थे उनके पास. अब डिफेक्शन पे तो रोक लग गया है, लेकिन अब क्या करते हैं वो लोग, वहां की पार्टी से रिजाइन करके यहाँ की पार्टी की शपथ ले लेते हैं. तो इट्स द सेम थिंग, इट्स अ लूप होल दैट दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ. सेकेंड, एक एफिडेविट मांगता है सुप्रीम कोर्ट giving details of property and criminal cases pending so that we can make sure at least we are not electing somebody with a criminal background. Number 3, election commission passed making it necessary for political parties to hold their organizational rallies and file their income tax returns. Yeah, a lot of people have also proposed कि right to information act लगना चाहिए party funding पे, but obviously no party is ever going to support that. That's why that will never be passed. But we need to know कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं.
तो जैसे आप कभी कभी सोचते होगे ना कि अच्छा मैं ये यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ, उसके नीचे ये वाला एड आ रहा है, तो ये वाले एड वाले ने ये यूट्यूब वाले को पैसे दिए होंगे तभी ये ऐसी ऐसी चीज बोल रहा है ना। अगर आप कोई XYZ प्रोडक्ट, कोई स्किन केयर प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर रहा है और कोई इन्फ्लुएंसर या कोई सेलिब्रिटी, और उसके नीचे आप उसी का एड देख रहे हो, तो एकदम से हम लोग को समझ में आ जाता है कि इसने इसको पैसे दिए होंगे तभी ये फेक रिव्यू बोल रहा है। तो सिमिलरली पॉलिटिकल पार्टीज में भी ऐसे ही होता है कि मल्टी मिलियनर्स विल प्रोवाइड देम विद मनी, और उसके बाद सर्टन सॉर्ट ऑफ लॉज विल कोइंसिडेंटली बी पास्ड इन फेवर ऑफ दोज बिजनेसमैन। तो इसीलिए वी ऑलवेज ट्राइंग टू जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, बिग हाउसेज हैं, जो बिलियंस मिलियंस में पार्टी फंडिंग में डोनेट करते हैं, एंड देन दे एक्सपेक्ट द लॉज टू चेंज इन देयर फेवर, वी रियली नीड टू ब्रेक द सिस्टम डाउन टू मेक आवर कंट्री मोर डेमोक्रेटिक. Okay. Besides these, many suggestions are often made to politically reform parties. Number one, regulation of internal affairs. वही जैसे मैं आपको बता रही थी कि democracy अंदर भी होनी चाहिए पार्टी के. It should be made mandatory for political parties to give a minimum number of tickets, about 1/3 to women candidates, and to people from a more humbler background. तो वो भी देना चाहिए उनको. There should be state funding for elections. The government should give parties party monies to support their election expenses. This support should be given in kind, petrol, paper, phone, or it could be given in cash on the basis of vote. So, government regulation on party funding, basically. ये कुछ suggestions हैं. So, I hope that you were able to understand this chapter and how political parties work in general. If you have any questions, please feel free to drop them in the comment section, and do subscribe to the channel. Thank you for listening.